Good morning, dear students. Last time we had solved some problems from exercise 9A, which is based on unitary method. Up to question number 9 I had already solved, and few questions I had given you for homework. I hope you have done that questions. Now I am going to solve question number 11 onwards. So question number 11 is the if the thickness of a pile of 16 cardboards is 44 millimeter, how many cardboards will be there in a pile which is 71.5 centimeter thick? Means when thickness of pile is 44 millimeter, number of cardboard required is equal to 60. Okay, then when thickness of pile is 1 millimeter, then number of cardboard required will be equal to 16 upon 44. Okay, unitary method. That's why I am finding a number of cardboard required for thickness 1 millimeter. Then when thickness of pile is 71.5 centimeter. 71.5, this is in centimeter. That is equal to, we know that 1 centimeter is equal to 10 millimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. So 71.5 centimeter is equal to into 10 करेंगे, that will be 715 millimeter. Number of cardboard required is equal to, see, ये मिलीमीटर में था, ये मिलीमीटर में था, ओके, ये 44, तो इसको भी मिलीमीटर में हमें चेंज करना पड़ा है. So it will be 16 upon 44 into 750. Now you can see 11 से 11 4 जा 44, 11 से 11 6 जा 66, and 11 5 जा 55, and 4 से 4 4 जा 16. So clearly it will be equal to 4 into 65, that is required number of cardboard will be 4 5 ja 20 and 4 6 ja 24 to 26. 260 cardboard will be required for making the thickness of the pile is equal to 71.5 centimeter. Okay, so that is the solution of question number 11. Now I am going to solve question number 12. So question number 12 is, at a particular time of a day, a 7-meter high flagstaff casts a shadow which is 8.2 meter long. देखो 7 मीटर हाई फ्लैगस्टॉप है और इसका शैडो जो पड़ रहा है, इसकी जो लेंथ है वो 8.2 मीटर. What is the height of the building which cast a shadow of 20.5 meters? Now what will be the height of the building whose shadow length is 20.5
meter in length and at the same moment. ओके देखो ये कह रहा है कि फ्लैग स्टाफ है, उसकी हाइट 7 मीटर है, तो उस शैडो जो मिल रहा है उसकी लेंथ 8.2 मीटर है। तो उस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी जो कितना जिससे जो शैडो की लेंथ फॉर्म हो रही है वो 20.5 मीटर है। ओके सो हाइट ऑफ when shadow length of shadow of 8.2 meter, length of shadow is 8.2 meter when height of flag stop is 7 meter. Okay, so when length of shadow will be 1 meter, then height of whatever the thing flag stop ही कर लो आप, flag stop will be 7 upon 8.2 मीटर। ओके देखो अब शैडो की लेंथ कम है तो जो भी बिल्डिंग होगी या फ्लैग स्टॉप होगी उसकी हाइट कम हो जाएगी। नाउ व्हेन लेंथ ऑफ शैडो will be कितने मीटर का है 20.5 मीटर, then height of building will be equal to 7 upon 8.2 into 20.5। अब यही सॉल्व कर लेना है। सो इसको सॉल्व करते हैं, जो भी डेसिमल में आएगा वो हो जाएगा। दैट इज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35 एंड 7 2 जा 14 and that is 82। so 1 time जाएगा, that is 82। so that one this is 61 remaining there, 5 now 8 7 ja 56 6, so 7 2 ja 14 and 7 8 ja 56 1 57, so remainder will be 41 after taking decimal, that will be 0। now I think it is 5 times, so 5 2 ja 10 and 5 8 ja 40 plus 1 41। okay, that is equal to 0। clearly when we solve this it will become 17.5 meter, that will be 17.5 meter, height of the building will be 17.5 meter। now next question number 13। question number 13 I am going to run this, read question number 13 everyone। Question number 13 is 15 men can build a 16.25 meter long wall up to a certain height in one day. How many men should be employed to build a wall of same height but of the length 26 meters in one day? Okay,
जाहिर सी बात है कि लेंथ बढ़ा दी गई है तो नंबर ऑफ मेन, क्योंकि टाइम सेम रखा गया तो नंबर ऑफ मेन बढ़ जाना चाहिए। ओके, तो डायरेक्ट वेरिएशन में है। सो क्वेश्चन नंबर 13, रीड अगेन। 15 men can build 16.25 meter long wall up to a certain height in one day. Okay, so how many men will be required for making the same height, but now length is 26 meter. So number of men required, number of men required for making 16.25 meter long wall in one day is equal to 15. Okay, then number of men required for making 1 meter long wall in one day। इस बात है कि अब लेंथ कम हो गई, वॉल की लेंथ जो 16.25 थी वो कम हो गई, 1 मीटर हो गई, तो नंबर ऑफ मेन कम लगेंगे, तो दैट विल बी 15 डिवाइडेड बाय 16.25। ओके, देन नंबर ऑफ मेन required for making 26 meter long wall in one day। टाइम सेम है, नंबर ऑफ मेन अब बढ़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि लेंथ वॉल की हमने बढ़ा दिया, सो इट विल बी 15 by 16.25 into 26। So 5 3s are 15, this one, and 5 3s are 15, 5 2s are 10, and 5 5s are 25। Now 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, 3 6 are 18 and 3 2s are 6 1 7, 26 3 are 78, और ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो आ जाएगा, और 325 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। सो ये 2 टाइम्स में 2 5 are 10, 2 2 are 4 1 5 and 2 3 are 6, so it will be 0, this is 3, this is 1, now that will be 0। So 3 4s are 4 times में 4 5s are 20, 4 2s are 8 to 10 and 4 3s are 12 1 13, कैंसिल हो जाएगा 24 टाइम्स में। सो 24, ये जब सॉल्व करेंगे तो टोटल 24 आएगा। 24 men required for making 26 meter long wall in one day। Answer will be 24। Now question number 14। Question number 14। In a hospital, the monthly consumption of milk of 60 patients is 1350 liters। ठीक है, how many patients can be accommodated in the hospital if the monthly ration of milk is raised to 1710 liters, assuming that the quota per head remains same। ठीक, पहले हॉस्पिटल में 60 पेशेंट्स थे और पर हेड फिक्स क्वांटिटी ऑफ मिल्क उनको दिया जाता था, तो टोटल कंजप्शन जो मिल्क का था
वो 1350 लीटर्स था। अब पेशेंट्स बढ़ गए हैं जितने भी हों, अब जो कोटा है मिल्क का वो 1710 लीटर हो गया। तो कितने पेशेंट्स उस हॉस्पिटल में अब हैं? तो नंबर ऑफ पेशेंट्स in the hospital who consume 1350 liters of milk is equal to 60. Then number of patients required will be in hospital who consume 1 liter of milk. अब कम हो गया क्वांटिटी, तो कम पेशेंट्स लगेंगे, 60 upon 1350. Then number of patients will be in hospital who consume 1710 liters of milk. That is 60 upon 1350 into 1710. ओके, आप देखो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, और अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 2 जा 6 एंड दिस वन इज 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, और 45 से इसको डिवाइड करें तो 1710 डिवाइडेड बाय 45 करें तो 4 4 जा 16, 3 times 3 5 जा 15 and 3 4 जा 12 1 13, that will be 11 6, and this one is 6, that is 3. Now 0, so now 4 8 8 5 ja 40, 8 4 ja 32, 4 36, 8 times this one. So this is 36 times ये cancel हो जाएगा. So 36 and here remain 2. So 36 into 2, 72 patients उस हॉस्पिटल में अब होंगे. Now last question number 15 will be homework for you. That's enough for today. Thank you so much.